I would like to present some statements of great science. In the Bible, Jesus Christ said, "Don't you know ye are the temple of God?" Jesus Christ says that we human beings are the temple of God. ईश्वर का मंदिर है हम लोग. From human body is the high power. I studied his books, and his famous statement is, "It is difficult to find happiness inside, but it is totally impossible in the outside world." There was an ancient Saint Socrates, the master of Plato. He said, "Know thyself." In the Gita, Bhagavan Krishna declares, "O my beloved Arjun, I am in the heart of all beings, all creatures. If you study the religious books of the different religious books, you will reach the conclusion that God is inside us, and the second name of God is happiness. That is inside us. Our great master, Maharishi Mehi Paramahansa Maharaj, says in his own song, which was recited just before some minutes, that God is inside, that is not outside. And he or she who goes inside gets complete peace, satisfaction, and he or she who goes outside can never get peace or satisfaction. Happiness is impossible for them who go outside. I want to clarify it in my own words. When we become happy, something happens. We see someone, we get something, we go somewhere, all these things happen, and we, after those happenings, we feel happiness. If we eat something, we feel happiness. If we talk to our friends, our bosom friends, our fast friends, we feel delighted. There are many ways to get happiness, to feel happiness. Where do you feel happiness? Where do you feel that delight, that satisfaction?
Someone says, when I meet my wife, my husband, my friends, this or that, I feel happiness. I feel happiness at Patna, in America, in England, in this country or in that country. Generally we talk like this. I feel happiness here or there or somewhere else. But we commit blunder. We don't see the fact. Really we feel happiness nowhere in the world. When we feel happiness, we always feel happiness in ourselves. When you eat something, where do you feel happiness? In yourself, not outside yourself. Never. If you go to Delhi, they are seeing some sights, some beautiful things. If you start feeling happiness, that happiness is where? Can you see that happiness at Delhi? Or at this place or at some other places? No. You always feel happiness inside yourself. Maybe there are many causes. Causes can be different and more than one. But when we feel that happiness, that place is not nowhere, but that is in ourselves. If you sleep, where do you go? When we sleep, when we are fast asleep, where we go? We go nowhere, but we go inside. Inside. And there we feel satisfaction, happiness, peace, totality. And when we come out in the world, we become dissatisfied, disordered, disorganized, disturbed, and all the problems arise, appear before us, and we never solve those problems. At this time, this is the age of science, physical science, astrology, astronomy, physics, chemistry, biology, quantum physics. So many branches of science have developed at this time. And there are many intelligent scientists. There are many leaders, many experts, specialists in different fields. But you feel that at this time the people of this world is more and more disturbed, and the disturbance is increasing day by day. It is not decreasing. At this time there is war, there is conflict, atomic war. That can happen. Anything can happen. And the people who are engaged in war, all of them are highly intelligent. Those are not less educated, half educated. Those are not half-minded. But I think in the worldly language, they are full-minded, we can say. But quarrel, wars, conflicts, struggles, which are leading us to complete danger, destruction, we are begetting all these things, we are causing all these things.
engineers, overseers, scientists, doctors, leaders, super leaders, all try to make this world free from problems, but problems are increasing day by day, and there is immense danger everywhere in the world. You can go to America, to England, anywhere, but problems will not leave you alone, but that will always disturb you. What is the reason? The reason is in the words of Saint Kabir, बस तू कहीं ढूंढे कहीं कहीं विधिया विहार, कह कबीर तब पाइए जो भेद लीजिए साथ. The thing, the object is somewhere else, and you are seeking, you are trying to get that object somewhere else, at other place. That's why this mistake is happening everywhere. If we want to correct our mistake, if we want to get or achieve the fundamental purpose of this life, we have to enter inside. There is no option, no way. This is the last, final, and without any exception that we have to enter inside. And all saints, philosophers, great personalities of this world are declaring in all ages they have and every time that is declared one of the greatest disciples, Maharshi Mehi Paramahansa Maharaj, who was an enlightened great rishi, who was famous in this state and even at this time in India. What he says, you listened to his words, Pujyapad Swami Bhagiradas Ji Maharaj. What he said? Before some time in the day, what he said? He said the same thing. He said nothing against those people, those personalities who have reformed this land, who have given us the teaching of the Upanishad, the deepest teaching of Vedanta. That is what we have to seek inside. We have to meditate. We have to make us concentrating in ourselves. I don't know the name of that engineer, Sahab, Mr. Engineer. He said in summary, between two eyes, that places the 10th door of this body. And that door is called the door to God. You have studied in the Bible, God says, the gate that is wide is full of dangers, and the gate that is narrow is full of happiness. In the world, all the ways, all the roads, all the gates are wide. Wide means full of problems. But there is one gate which is narrow, and that gate is what? That gate is called in Indian language, in the language of rishis, 10th door, Dasam Dwar, Sushumna, third eye, and in the language of Sufi saints, God-seeking eye, secret eye, so many words. The eye of love. Though this is the place where we can enter. And if we enter inside and stay there for some time, it is necessary that we have patience.
If we don't have patience, we can't feel that peace. There was a philosopher, I am forgetting his name. He was perhaps an atheist, and he tried to defeat Swami Vivekananda. He said, when I enter inside, means when I meditate, take meditation, there is nothing inside, just disturbances, just disturbing memories and nothing. So I will not support you. I don't think there is peace inside. But if he were intelligent, he could have thought, when we sleep, at that time where we go? Even when we sleep, we go nowhere but inside. And when we stop sleeping, get out of our bed, at that time we feel happy, satisfied, full of energy. There is no problem at that time. What we get, and from where we get? We get from inside, not from outside world. So, if you study religious books and listen to great personalities who have understood and who have followed this path and paid attention to it, they say there is peace inside us. And if you don't accept it, without saying, without your accepting argumentation, or without your knowledge, you accept that peace is inside. When you get sleep, fast asleep when you are, after that you get satisfaction. This is what? This proves that, this is the proof that always peace is inside. It was said by Mahasi Mehi Paramahansa Maharaj. So we must do, and who have gotten peace, all of them were the seater, means they would sit continuously or time to time and take meditation deeply. After that attempt, they declared that they are liberated. So this is the path, this is the way, this is not something new. This is the oldest thing that is said time and again by modern sense. So we are fortunate, and even this American one is extremely fortunate to come to the saint like respected Baba, who is one of the greatest disciple of Mahasi Mehi Paramahansa Maharaj. So she is fortunate, and I think she must learn from him. We would like together to, and she will learn, or if she has learned, no matter, that is repeated. ये मैंने कहा, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। समझा दीजिए, अंग्रेजी में बोलो, अभी हिंदी में समझाएंगे, हिंदी में समझाओ बढ़िया, हिंदी में समझाएगा। हमारे श्रेष्ठ गुरु भाई हैं पूज्य स्वामी नरेशानंद जी महाराज, इन्होंने कहा आप समझा दीजिए। समझा देता। मैंने कहा भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन मैं सब प्राणियों के दिल में रहता, हृदय में रहता। मैंने एक उदाहरण दिया, जो यूनान देश के संत हुए शुक्रात, उन्होंने कहा अपने को जानो,
क्यों कहा अपने को जानो समझ जाइए। जर्मन दार्शनिक, और वे दार्शनिक का मतलब आजकल के तरह दार्शनिक नहीं थे, सिर्फ लेक्चर देने वाले, सिर्फ बहस करने वाले नहीं। दार्शनिक का मतलब उस समय कुछ और होता था। जो दर्शन करते हो, मतलब जो अनुभव करते हो इस ज्ञान का, शांति का, या अनुभव करने के लिए प्रयास करते, उसी को दार्शनिक कहा जाता था। अब उसका अर्थ ही गड़बड़ हो गया। वही जर्मनी के दार्शनिक हुए शोपेनहावर, उन्होंने कहा अपने अंदर में शांति को पाना ये कठिन है, लेकिन बाहर में तो बिल्कुल असंभव है। बाहर में कोई शांति नहीं प्राप्त कर सकता है। इस तरह कई उदाहरण देकर के मैंने पूज्यपाद गुरु महाराज की वाणी का जो पाठ हुआ उसका थोड़ा सा संक्षेप में कहा। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलत है। ये भीतर का रास्ता बड़ा अद्भुत है, और अपने अंतर में ही चलने पर परमात्मा, परमात्मा का मतलब अनंत शांति, अनंत आनंद, अनंत गुण भी कह सकते हैं आप। मतलब हर तरह से जो पूर्ण है उसी को परमात्मा कहा जाता है। और इसको मैंने थोड़ा अपने ढंग से समझाया कि भाई ये कैसे आप मान लेंगे कि हम ही में शांति है, आनंद है। तो आपको मैंने कहा देखिए जी, कभी कभी आप साथी से मिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, आनंद महसूस होता है। कभी कभी आप भोजन खाते हैं बढ़िया तो आनंद महसूस होता है। कभी कोई दृश्य देख लेते हैं तो आनंद महसूस होता है। कभी कभी आप गीत सुन लेते हैं तो आनंद महसूस होने लगता है। लेकिन जब आनंद महसूस होता है तब आप बोलते हैं अरे आनंद आ गया, मुझे आनंद आ गया। लेकिन वास्तविक बात ये नहीं है। आनंद आपको आया नहीं कहीं से, आनंद कहीं से नहीं आया। यदि आनंद कहीं से आ जाए तो हम खाते रहें और आनंद आते रहे। खाते खाते परेशान हो जाते, अपने दोस्त से बात करते करते परेशान हो जाते हैं, और भी संसार के काम करते करते परेशान हो जाते हैं। मतलब ये हुआ कि आनंद आया नहीं, हम शांत हो गए। हमको एक भ्रम हो गया, अरे हम साथी से मिल लिए, हमने अच्छा भोजन कर लिया, बस अब सब कुछ ठीक हो गया। तो ये जो सोच लेते हैं तो अपने आप में स्थिर हो जाते हैं, और जैसे स्थिर होते हैं तो अपने में अनुभव होता है। अच्छा, अनुभव कहाँ होता है? आपको आनंद का अनुभव कहाँ होता है? कभी आपको आनंद का अनुभव घर में, बाहर में, ये सब आदमी बोला करते हैं कि हम वहाँ गए तो आनंद आ गया। वहाँ नहीं, गलत बोलते हैं। जब भी आपको आनंद का अनुभव हुआ है तो अपने में अनुभव हुआ है। आनंद का अनुभव कभी भी बाहर नहीं होता, चाहे भोजन करने के बाद हो या फिर बात करने के बाद या सोने के बाद। जब भी आनंद आता है तो अपने में आनंद। कभी आपको बाहर में आनंद दिखाई पड़ा है? किसी को बोलिए, किसी को भी नहीं, कहीं नहीं। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा अपने में खोजो, निजतन में खोज सज्जन। आप वास्तव में आनंद स्वरूप है, परमात्मा के टुकड़े हैं, आप हिस्से हैं, अंश हैं। परमात्मा आनंद है, आप भी आनंद स्वरूप हैं। तो आनंद का अनुभव कहाँ होगा? जब भी आनंद का अनुभव होगा तो अपने में ही आनंद का अनुभव होगा। वही कहते हैं अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। इस डगर पर जो चलते हैं वही आनंद को प्राप्त करते हैं। मैंने ये भी कहा, पुराने संतों ने जो कहा वही हमारे गुरु महाराज ने कहा, और वही हमारे गुरु महाराज के महान शिष्यों में से एक
पूज्यपाद स्वामी भगीरथ दास जी महाराज ने भी कहा, वही कहा ध्यान करने के लिए। तो सारे संत इस बात को कह रहे हैं, हिंदू रहे, मुसलमान रहे, सिख ईसाई जो भी रहे, यही सब के सब कह रहे हैं। यही मैंने कहा अंग्रेजी में। सबको प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और संग सत गुरु के की जय। अंतर जो जय पांच तत्व तन अग्नि जराई। दीपक चास प्रकाश करी। जय गगन थाल रवि शशि फल फूला। मूल कपूर कलश धर दीजय। अक्षत नव रे मुक्ताहल पोह पमाल। हार गोही जय शीत पान मिष्टान मिठाई। चंदन धूप दीप सब चीजें। झलक झांझ मन मीन मंजीरा। मधुर मधुर धुनि मृदंग सोनी। जय सर्व सुगंध ओढ़ी चली आकाशा। मधुकर कमल के धोनी धी। जय निर्मल जो जरत घट माई। देखत दृष्टि दोष सब चीज। अधर धार अमृत बही आव। सतमत द्वार अमर रस बीज। पी पी होय सुरत मत वाले। चढ़ चढ़ ओ मांगे अमीरस रे। जय कोट भान छवि तेज उजाली। अलख पार लखी लागल
आखे गुरु प्रसाद गमरस पीजे दमकत कड़क कड़क गोरुधामा उलटिया लल तोल सीतन तेज आरती तन मंदिर में गिरज दृष्टि योगल कर सन्मुख दीज चमके बिंदु सूक्ष्मयति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखली जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखे निरखे ज्योति तज दीज शब्द सुरत अभ्यास सरल तर करि करि सार सबद गहिली ऐसी जोगति काया गण त्यागी भव सक जय भखंड रतिया निर्मल करि में अमृत रस पीज आरती तन मंदिर में कीज दृष्टि योगल कर सन्मुख दीज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज इसका आई बोला नाथो बाबा नाथो बाबा